So recursion is the most tough topic in the C part because uh, it's kind of mathematically more heavy, so it needs some time to digest it, but it's okay. I will try my best to make you understand it. So first thing, to understand recursion, we need to understand what is function. Okay, I guess I have explained it previously, but let me do it again. So let's go. Wait a minute. So first, there we have to make a function. Okay, function is a block of code that execute when we call it, and it executes a sets of instruction it is given. Okay, so in the function always have to be mentioned after the preprocessor directive. Okay, and in the int main part, in this int main part, we have to write the logic, the core logic, the variable, the loops, and all kind of things we have to write there. Before that, we have to mention the function and all. So let's do it. First, we have to write the data type, then the function name, then there we have to mention two parameters. I take int a, int b. Okay, then here we will write the logic of it. Logic. Let's take scanf. Don't need scanf. I think we can just return a normal function, that is a plus b. Bas, that's all. Okay, and in here we just gonna call the function, and we gonna give them numbers, and it should not run. Will it run? No, it will not, because we have to print it. Let's store this into a variable named sum equals to int sum, because we are mentioning the type printf. It's easy if we just store the answer in a variable, then in the printf function, not print, in printf function, we just gonna call the sum variable and it will be done. So let's try this out. Here we use the format specifier, and here we write the variable name, and let's see, will it run? Yes, it will. Let's change it to 10 and let's check it out. It is working. So I hope you can say it that it's good 11. So that's the basic definition of function. That's not recursion. Recursion means a function is calling itself. What it means? A function is called itself. Okay. So to understand that, we first have to understand what is factorial. I am assuming you don't know anything about maths and computer science. You don't have anything. So what is factorial? Factorial is an expression that is denoted as n, and there after that there will be exclamation sign. It's factorial. What factorial means? That means n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 to 1. The base case is 1. In short form, we can write n into n minus 1 factorial, because n minus 1 factorial means n minus 1, n minus 2. I guess you can understand what I'm saying. And if you have like mathematical background, you know what I'm saying. And if you don't, try to go through what is factorial and understand what is factorial. Okay, so what is 2 factorial? 2 factorial means 2 into 1.
So let's see what is 2 into 1, that is 2. So let's search for 2 factorial and check it out. 2 factorial is 2. Let's check it out for 3. 3 factorial should be 3 into 2 into 1. So 6. Got it. I guess you got it. So what we can write? We can write 3 factorial equals to 3 into 2 factorial. I guess we can write that because 2 factorial means 3 into 2 into 1, that means 6. So here we can get the same answer. So I guess you got the factorials concept. Why I'm understanding factorial? Because best example of recursion consists with factorial. That's why I make you understand what factorial is. Now let's move on to recursion. Okay, recursion, without using recursion we also can solve some problems, but we use recursion because, okay, first we need to understand why recursion is needed, why there is like loops, loops, functions, this, that, why we need recursion. Okay, to understand that we need to understand what is recursion. ये हो गया recursion stack, ये बाद में समझाऊंगा, ठीक है. Okay, recursion क्या करता है? I mean, we didn't introduce to loops till now, but loops क्या करता है? Loops है कि एक काम हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा. अगर मैं चाहूँ कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो, मैं 1 2 3 4 या 10,000 तक नंबर प्रिंट करना चाहूँ, मुझे नहीं प्रिंट करना पड़ेगा. I just have to write some codes, some small codes, some small chunk of codes, and it will be executed and we will get our desired result. Okay, so why recursion came? Recursion came into the picture because to optimize loop, recursion came. Okay, what is loop? Avoid that. Okay, a loop is a process by which we have to write less code. Okay, we understand what is function. So we are just making a normal function name int factorial where we have to take a number because we want to get a number. Okay, so what the formula says, n factorial says n into n minus 1 factorial. Okay, so we got that कि n factorial मतलब है n into n minus 1 factorial. ठीक है, तो फैक्टोरियल कॉमन है, तो मैं अगर फैक्टोरियल का फंक्शन बना दूं, अगर मैं किसी तरीके से फैक्टोरियल का ही फंक्शन बना दूं, तो मैं उसे बार बार यूज कर सकता हूं. तो रिकर्जन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मैं उसको बार बार यूज कर सकता हूं. सेकेंड, रीडेबिलिटी ऑफ द कोड. अगर मैं नॉर्मल तरीके से जब हम लूप पढ़ेंगे, लूप के तरीके से अगर फैक्टोरियल बनाएंगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. वी हैव टू यूज मल्टीपल लूप्स, फॉर लूप्स, इफ एल्स, फलाना ढिमका थिंग्स, बट हियर वी डोंट हैव टू यूज देम. रीडेबिलिटी. Then there is problem solving approach. In data structures, to optimize code, recursions are used. So enough है शायद हमें ये समझाने के लिए कि why we need recursion. Remember the jargons की readability, problem solving, data structure optimization, and build the answer. I am just here to make you understand the logical part. Okay, so ये वाला पार्ट हुआ. दूसरा जो पार्ट है मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, मैंने फैक्टोरियल का कोड लिखा है शायद. लेट मी सी. नहीं लिखा. ओह, फैक्टोरियल का कोड पहले लिखा है मैंने. लेट मी सी. रिकर्जन बेस केस पता है. अच्छा, कॉल स्टैक आगे. রিডেবিলিটি, এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
why we need recursion, advantages of recursion, readability, problem solving. আচ্ছা, এখানে আমরা কি দেখছি, রিকারশনে 3-4খানা স্টেপ হয়, ঠিক আছে। রিকারশনের প্রথমে হচ্ছে ইন্ট ফ্যাক্টোরিয়াল, ইন্ট এ, এত অব্দি আমরা লিখেছি। তারপরে পার্টটা হচ্ছে আমরা একটা বেস কেস নিই, বেস কেসটা এখন ধরতে হবে না, আমাদের কি লক্ষ্য করতে হবে, আমরা ধরো n নিচ্ছি, n ইজ আ বেটার অপশন দ্যাট ক্যান সি দ্যাট n। আচ্ছা, এখানে আমরা কি দেখছি, এখানে আমরা দেখছি যে n ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়ালস টু n ইন্টু n মাইনাস 1। সো আমরা কি করি, রিটার্ন, আচ্ছা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের কাজ কি, ফ্যাক্টোরিয়াল বার করা, ওকে। সো লেটস ডু ইট, ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের কাজ কি, ফ্যাক্টোরিয়াল বার করা, লেটস ডু দ্যাট। তো আমরা এরকম করে লিখতে পারি যে ভাই যদি আমি জানি না যে এটা কাজ করবে কিনা, বাট ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের কাজ যদি ফ্যাক্টোরিয়াল বার করা হয়, তাহলে n এর সাথে যদি n মাইনাস 1 এর ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা গুণ করে দিই, আমরা জানি না ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের মধ্যে লজিক্যাল পার্টে কি চলছে, আমি জানি না, আমার জাস্ট মোটিভ হচ্ছে যদি n এর সাথে আমরা n মাইনাস 1 এর ফ্যাক্টোরিয়াল গুণ করে দিই, তাহলে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড আউটপুট পেয়ে যাবো। বাট দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? তার জন্য আমাদের কোডটাকে রান করতে হবে। ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে গিয়ে দেবো, আমরা একটা নিজের মতো করে ইনপুট নিচ্ছি, প্রিন্ট এফ, যার মধ্যে আমরা দেব %d and here we give, এখানে একটা ইনপুট নিয়ে নিই যাতে আমরা ইজিলি ওটা শো করতে পারি, টু ইনক্রিজ এর রিডেবিলিটি অ্যান্ড ইজ এর জন্য হয়, and I think it should work. बटन क्या कि भाई, ओके इंट नाम ओके नहीं चला बट इसने एरर दे दिया, ठीक है, कोड नहीं चला बट एरर दे दिया। क्यों? बिकॉज इट गोज इनटू अ इनफाइनाइट लूप। व्हाट इज इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप मतलब, let me do a flow chart for you, like मैंने पहले दिया factorial 5, here we give factorial 5, so n मतलब क्या है 5, फंक्शन ने लिया 5, उसने किया 4, फिर बोला int I, ओके 4 है, 4 के साथ फिर माइनस करो, क्योंकि यही बोल रहा है कि 4 तो है, 4 के साथ n माइनस 1 करते जाओ 3 लिया, उसने 2 लिया, 1 लिया, फिर 1 माइनस 1 गया, 0 लिया, ओके 0 के साथ माइनस 1 लिया, ऐसे वो चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल उसमें कोई कोड ही नहीं है, फैक्टोरियल इज अनडिफाइंड इन इटसेल्फ, क्योंकि वो एक वॉइड फंक्शन है एज ऑफ नाउ, मैंने जब तक कुछ नहीं किया, एज ऑफ नाउ इट्स अ जस्ट अ वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो उसको कहाँ स्टॉप करना है उसे पता नहीं है, तो दैट विल रन अ इनफाइनाइट लूप, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि वो चलता ही जाएगा, ओके, बट इट्स अ केस ऑफ रिकर्जन। व्हाई रिकर्जन? because it's a function named factorial, and in the function itself we are calling a function that's name is factorial, so we are calling factorial in factorial, so that's why it's a recursive function. But in recursion there is a concept called base case, so you have to take a base case যে ভাই এখানে গিয়ে তুই থামবি, তারপর চলবে না, n into n minus 1, I guess it's written, then ডট করে 1 অবধি যাবে, তো আমাদের 1 এর কেসটাকে ডিসাইড করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই there's a concept called if and else. what is if and else? if and else মানে হচ্ছে এই পার্টটা যদি চলে, আচ্ছা এখানে কিছু কন্ডিশন থাকে, if এ প্যারামিটারে কিছু কন্ডিশন থাকে, যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে ওর পরের পার্টটা চলে, দেন there is a else if, যার মধ্যে কিছু কন্ডিশন থাকে, যদি সেই কন্ডিশনটা ট্রু হয় তার মাঝের পার্টটা চলে, আর এলস থাকে, এলসে কোনো কন্ডিশন থাকে না, এলসে let me write first, এলসে কোনো কন্ডিশন থাকে না, এলসে জাস্ট কি থাকে,
এলসে কোনো কন্ডিশন থাকে না, যদি ইফ আর এলস ইফ না চলে তাহলে এলস ব্লকটা চলে, দ্যাটস অল।